गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद लाइव में आए। हेलो एवरीबॉडी, बहुत दिन बाद लाइव में मुलाकात हुआ आप लोगों से। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बजट को देखेंगे। बजट स्टार्ट हो चुका है। ओके, स्टार्ट द बजट। सबसे अच्छा कौन सा है बजट देखने के लिए चैनल? हमेशा पूछता हूँ, कोई ना कोई अच्छा निकल जाता है। सीएनबीसी या इंडिया टुडे? क्लास के स्कूल जैसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दिव्य ट्रेड्स, गुड मॉर्निंग सी बिजनेस। चलो बजट लाइव जी बिजनेस पे ही देखते हैं। राम राम जी, राम राम। मेरे हिसाब से मनी कंट्रोल ही बेस्ट था हमेशा। लास्ट टाइम भी वही था। चलो स्टार्ट करते हैं। दो मिनट दीजिए। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। 2 मिनट दीजिए, एकदम ओपन कर लेते ठीक से पहले। सीएनबीसी भी उतना अच्छा नहीं है। सनसेट टीवी अच्छा है, लेकिन मुझे हिंदी उतना अच्छा समझ में नहीं आता है। तो मतलब समझ में इन द सेंस ऑफ पढ़ना नहीं आता उतना अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट दीजिए, सेटल होने दीजिए थोड़ा। मार्केट को थोड़ा मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए। देख लेते हैं क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ओके। चलिए, देखते हैं बजट, आराम से देखते हैं।
लीजिए आप लोग भी लाइव देखिए, हम भी देखते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या क्या है नहीं है। And short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on tur, urad, and masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024.
India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To Fertilizers augment urea supply, on the cards. A plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people, and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. Volume बहुत है, आप फोन का volume तो बढ़ाइए. What is this? For micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. अभी trade मत कीजिए, trading का time थोड़ी है. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat.
and for well-run exporter MSMEs for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Allocation. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. फंड तो देगा, लेकिन एलोकेशन कैसा होगा वो सबसे बड़ी बात है. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. अभी तक तो बजट बहुत अच्छा ही है. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship, and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कीजिए, मैं देखता हूँ, ठीक है, प्लीज अभी थोड़ा यहाँ पे फोकस करते हैं. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid scale batteries. Investment as the third engine. बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है ड्यू टू एमएसएमईज का सपोर्ट. एनबीएफसी को बहुत अच्छा खासा मिलेगा. Which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation.
investing in people, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. ये अच्छा डिसीजन है. पहाड़ों में न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा मेल न्यूट्रिशन रहता है. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. ये इतना अच्छा कैसे बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है. Connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. मुझे भी वही लग रहा है, ट्रेडर्स को ही मारेगा. National Centers of Excellence for Skilling. हमारा ही लेने वाला है. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Itna engineers? Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. ट्रेड मत करो, इतना अच्छा बजट आ रहा है. सुनो, सारा सेक्टर को समझो. ट्रेड 12:30 बजे के बाद लेंगे. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. MSME का न्यूज़ सच में अच्छा था, इसलिए बैंकिंग सेक्टर अच्छा रिएक्ट कर रहा है. In all district hospitals. हमने पहले भी डिस्कस किया था, बस एलोकेशन का रिस्क रहेगा. पूरे वादे हैं या सच में हो? Setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life.
PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy, public sector that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so. 4-5 सेकंड स्लो होगा क्योंकि support from the YouTube का वो लाइव India है. Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. 1.5 lakh crore without interest. The success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. 15 लाख करोड़ तक मैं सोच के रखा था, 11 लाख कर दी. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. आपने बैंक निफ्टी पकड़ा है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. कीप ग्रोइंग, बहुत पैसा कमाइए. अभी बजट सुनिए will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. अभी तक बजट बहुत अच्छा है. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crores is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Bengal तो फिर भी इस मामले में पीछे ही है. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. क्या बोल रहा है? For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act
and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. क्या बात है यार, क्या बजट बोल रहा है? Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. Udan regional connectivity schemes. Udan has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified Udan scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. एयरपोर्ट के लिए अच्छा न्यूज़ है, शिप बिल्डिंग के लिए अच्छा न्यूज़ है, डिफेंस सेक्टर अच्छा है, कनेक्टिविटी सेक्टर अच्छा है, इतना अच्छा बजट The एक्सपेक्ट scheme नहीं will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. बिहार का बजट इतना अच्छा दे रहा है, क्या बोलूं मैं, सब वहां पे जा रहा है, क्या बात है। ये सेंटर वो सेंटर सारा इंस्टीट्यूट बिहार में डेवलप हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग, ये ग्रीन फील्ड का पहला चीज। This will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. पॉलिटिक्स बंगाल के लिए कुछ तो कर दो ताई। Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund
of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript modernization of land records. Academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions.
This will complement the Unified Logistics Interface Platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit समझाएंगे of सारा our पॉइंट youth. लिख रहा हूँ बजट के एंड पे सब कुछ सब डिस्कस करेंगे A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in Bengal के लिए emerging सच में कुछ Tier नहीं है। 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. अच्छा न्यूज़ है कंपनीज के लिए अच्छा न्यूज़ है मैं बताता हूँ लास्ट में coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped central KYC registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business.
We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A आफ्टर द बजट में light-touch पूरा सिंप्लीफाई regulatory करके बताऊंगा आप framework लोग. based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. ये पागल हो गया है क्या? The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Beauty! Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. इतना अच्छा? To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1.
remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, फेक नहीं दिया क्या? 4.8% After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidents will reduce marginally. 3. Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. देखिए, दिस इज मुझे जितना समझ में आ रहा है मैनिपुलेशन हो रहा है, To promote domestic मार्केट production इनएफिशिएंसी of को लेकर फिर से technical अपसाइड की textile तरफ भाग products सकता है। एक such दिन लेने as से मार्केट खराब नहीं होगा, बजट agro-textiles, बहुत अच्छा है, medical मैं बोल रहा हूँ। textiles, टैक्स का and अभी तक आया नहीं, वो geotextiles बताता हूँ मैं at बाद में। competitive prices. I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years.
also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. तो आज समझ लो मार्केट का क्या डायरेक्शन है, कैसा क्या है, कल से ट्रेड करो. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. बारह 15 को थोड़ी देर बाद देखते हैं. अगर कॉन्स्टेंटली लो तोड़ता है तो हम नहीं करेंगे, कल डिस्कस किया था. अगर थोड़ा रेंज बना लेता है तो ठीक है. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy.
Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi. Meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed
that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings scheme accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. अभी तक जो बजट है 80% अच्छा है सबके लिए, 20% जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी तक उतना कुछ अच्छा नहीं आया, मैं बताऊंगा लास्ट में। services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. चलो अच्छा है, NRIs के लिए अच्छा है तो बाहर के कंपनीज को अच्छा Presently, the मिलेगा। tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities. To promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector, I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class
provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. फाड़ दिया जी ऑटो फाड़ेगा इंश्योरेंस ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा एलटीसीजी भी प्लीज, एलटीसीजी एसटीसीजी थोड़ा हट जाए बस। So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. इतना एडवांस टैक्स में भर के रखा हूँ, इसका क्या होगा? 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that capital there is gain no को count नहीं tax करेंगे ये payable लोग। by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. अब सोचो 12 लाख कैपिटल गेन Speaker, sir, कहाँ से with this, I commend the budget to this august house. कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा? अच्छा चलो ठीक है, 12% ही ले लो, इंक्लूड तो कर लो कमाई में। आइटम नंबर Finance Minister Nirmala Sitharaman leaving the best for the last.
सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, जो बोल रहा था कि ऐसा हो गया कि सब कुछ अच्छा था, पूरा मैच हाथ पे था, लास्ट पे आके हार गया। एक ओवर में 2 रन 3 रन चाहिए होता था, छोटा सा, बस वो भी हार गया। सब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे A to Z। सबसे पहले दुख की बात कर लेते हैं, ठीक है, दुख की बात पहले कर लेते हैं। साउंड आ रहा है ना अभी? मार्केट के अपडेट्स के बारे में मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स देखो भाई, सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको पैसा लगाना है, बड़ा पैसा, तो आप हमेशा ऑप्शन पे तो लगाओगे नहीं, आपका एक चाल रहेगा, स्टॉक्स पे लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे। सपोज आप, मतलब मैं कोई भी एक अमाउंट पकड़ लो, अगर आप 1 रुपये से ऑप्शन ट्रेड करते हो तो 10 रुपये कहाँ लगाओगे? ऑप्शन पे ना, एब्सोल्युटली नॉट स्टॉक्स पे। तो उसके लिए बजट समझना बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम इंडिया कहाँ पे जा सकता है, कौन सा सेक्टर्स फोकस है, सब कुछ मैं डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग हो जाएगा, करेंगे ना ट्रेडिंग, थोड़ा समझ लेते। तो मैं पहले आप लोगों को चीजें समझाता हूँ। सबसे पहला चीज जो दुख से शुरू करते हैं, 12 लाख तक इनकम टैक्स पे रिबेट है, ठीक है, डिडक्शन वगैरह मिला के, बहुत अच्छी बात है। अब दिक्कत यह है कि 12 लाख में कैपिटल गेन को नहीं जुड़ा जाएगा। अब एनेक्शर में और ज्यादा हम चीजें समझ पाएंगे, लेकिन उनका स्पीच में इतना समझ में आया, कैपिटल गेन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम दैट विल बी गेट रिबेटेड अप टू 12 लाख, ठीक है। मतलब कैपिटल गेन को जुड़ा नहीं जाएगा। तो ट्रेडर्स को सरासर ये एकदम डायरेक्ट तीर मार दिया है ना, क्योंकि सपोज एक सैलरीड पर्सन है, 1 लाख पर महीना, बढ़िया है। 80,000 पर महीना, बढ़िया है। जो भी हो, बढ़िया है। जिसका स्टॉक मार्केट से सपोज 10 या 15% इनकम आता है, वो चलो ठीक है। लेकिन जो मतलब एक ट्रेडर है, उनका तो और क्या, मतलब साइड इनकम उनका 10-15-20% होगा, मेन इनकम तो यहां से होने वाला है। तो यहाँ पे सरासर ये चीज अच्छा नहीं लगा। कम से कम जुड़ जाता, कैपिटल गेन को जुड़ जा, मतलब देता कि हाँ चलो कैपिटल गेन से भी आएगा तो चलेगा, तो भी सही था। 12.5% तो हम वैसे ही दे रहे हैं LTCG। 12.5% अगर हम इंडेक्सेशन को नहीं लेंगे तो 12.5% देंगे, अगर इंडेक्सेशन को लेंगे तो 20% देंगे। तो LTCG STCG तो दे ही रहे, कम से कम इतना इतना तो हक था। एनीवे, रोध होकर फायदा है नहीं, ठीक है। रोध होकर फायदा इसलिए है नहीं क्योंकि सीधी सी बात है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। मिडिल क्लास इतना दिन तपे है, बहुत प्रॉब्लम में था। लोअर मिडिल क्लास उनको अब थोड़ा रिलीफ देगा, और जो नया भीड़ आया है स्टॉक मार्केट पे, उनसे ये मतलब वो मैनेज करवाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। अब मेजोरिटी कहाँ पे? मेजोरिटी स्टॉक मार्केट पे नहीं है, 10-15% है। मेजोरिटी मिडिल क्लास है, दे आर गेटिंग एंग्री वोट बैंक से। तो वही बात है। तो ओके, ठीक है। ये जो मतलब मैंने बताया कि आपको हमारे लिए दुख की बात है। अब अच्छी बात है मिडिल क्लास के लिए, ऑब्वियसली 12 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन है। उसके साथ साथ क्या है, TDS घटेगा हर एक प्रोडक्ट पे। जब जैसे कि आप क्रिप्टो में जब आप विड्रॉ करोगे तो आपका TDS लगता है, TDS घटेगा। TCS जो टैक्स कलेक्शन फ्रॉम सोर्स होता है, कोई भी टैक्स पे टैक्स कलेक्शन फ्रॉम सोर्स, गाड़ी खरीदने जाओगे 1% TCS कटता है, तो वो सारा चीज़ें घटेगा। तो इट्स ओके, ओवरऑल अच्छा है। मतलब मैं इकोनॉमी के लिए अच्छा बोलूंगा, हमारे लिए अच्छा नहीं है हर बार की तरह, ठीक है। अच्छा, अब शुरू से एकदम शुरुआत की पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स की लेनी थी, मतलब ये ऐसा हो गया कि स्लो पॉइजन की तरह, मतलब धीरे से लिया, ठीक है, जोर जोर नहीं दिया। ओके, अच्छा। रेलवेज नहीं, रेलवेज पे बोला है, हम आगे आएंगे। रेलवेज डिफेंस दोनों में बोला है, हम आगे आएंगे, ठीक है। चलो, गुड फॉर MSME, जो मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो है, MSME के लिए बहुत अच्छी बात है। वाई? वहां पे फंड्स दिया जाएंगे, क्रेडिट कार्ड्स इशू किया जाएगा, 5 लाख तक विदाउट एनी वेरिफिकेशन क्रेडिट्स दिया जाएगा। बहुत मतलब बहुत सारा चीजें हैं, MSME के लिए अच्छा है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा सबसे मुझे मजेदार लगा, ठीक है। ओके, गुड फॉर MSME है। अच्छा, रूरल एंड एग्रीकल्चर हर बार की तरह थोड़ा सा फंड दिया जाएगा, कृषि योजना आएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है कि फंड दिया क्यों नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि एलोकेट ठीक से नहीं हो पाता है। निकल तो जाता है गाड़ी इधर से, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है, वो आपको भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मखना। वेरी गुड, बिकॉज अगर आपको पता है तो मखना एक ऐसा एक प्रोडक्ट है, जो लोग मतलब जो बिहार में रहते हैं, हमारे बिहारी भाई बहन, उनको पता है। तो मखना इज अ वेरी गुड स्नैक्स, ठीक है। पॉपकॉर्न से बेटर है, न्यूट्रिशन पे भी। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 2020-21 तक प्राइस बहुत नॉमिनल था, अब 10 गुण बढ़ चुका है। और अब एक्सपोर्ट वो ब्यूटीफुली हो रहा है, क्योंकि मखना अब क्या है ना, मखना पे पॉपकॉर्न, जैसे कैरामलाइज पॉपकॉर्न पे 20% टैक्स लग गया 18% GST आ गया। तो अब वही थॉट प्रोसेस को लोग मखना पे लेके जाएंगे। गवर्नमेंट मखना हो गया, और बहुत कम स्टार्टअप्स है मखना पे। तो मखना इज गेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, उसको अटेंशन मिल रहा है। और उसका पूरा एक मतलब
यूनिट, पूरा बॉडी बिहार में सेट किया जाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मखना। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिनको स्टार्टअप वगैरह करना है आप मखना पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। कॉटन के लिए भी एक्सपोर्ट हो गया, हम एक्सपोर्टर ही है कॉटन का, तो एक्सपोर्ट हो गया, बहुत सारा सब्सिडीज हो गया, कॉटन का दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है गुड फॉर एक्सपोर्टर, मतलब एक्सपोर्ट्स में बहुत सारा छूट दिया गया है, रेगुलेशंस को लेके, कस्टम्स को लेके, ईज ऑफ एक्सेस को लेके, बिल्टी को लेके, साथ ही साथ अगर हम बोलते हैं कि जो जो भी मतलब एलआर वगैरह होता है, बहुत अच्छी तरीके से एलसी होता है, जैसे कि मतलब आप अगर एक्सपोर्ट लाइन पे होंगे तो आपको पता रहेगा, तो ये सारा चीज़ पे बहुत अच्छा छूट दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ना एक कंपनी खोल लो, मखना को एक्सपोर्ट कर लो, मतलब इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है स्टार्टअप्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है लेदर्स और टॉयज के लिए। ठीक है, लेदर और टॉय दोनों को ही सब्सिडी दिया गया है, लेदर मटेरियल्स को, टॉयज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अब फोकस किया जाएगा टॉय इंडस्ट्री को, ऑब्वियसली। तो बहुत टॉयज होता है जो कि बाहर से आता है, इंडिया में बहुत कम है टॉय इंडस्ट्री, राइट, मेड इन इंडिया नहीं है, तो इस पे मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अच्छा, मखाना, मखाना, ठीक है ठीक है, मखना हो मखाना हो, आई एम सो सॉरी, मेरा एक्सेंट मतलब मैं उतना खाता नहीं हूँ, तो आई हैव जीरो मतलब लो एक्सपर्टीज ऑन दिस प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट इन बिहार। अब ये बिहार का बजट है, ऑब्वियसली हम सबको पता है, कोएलिशन का सरकार होगा तो और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तवा तवा तवा। ओके, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट इन बिहार है, मतलब जो जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, इस बार का आप अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो खोलोगे तो फूड प्रोसेसिंग पे अच्छा खासा फोकस किया गया है। ओ देखो, एफएमसीजी भाग गया, ठीक है, टाटा मोटर्स क्या कवर किया है, लाभली। हाँ, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इंस्टीट्यूट फूड प्रोसेसिंग का जो इंस्टीट्यूट है उसको मतलब बनाया जाएगा बिहार में, इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा एक प्रॉपर बॉडी के हिसाब से, एंड दैट इज गुड, आई थिंक दैट इज गुड। देयर शुड बी सम रेगुलेशंस ऑन फूड प्रोसेसिंग, नहीं तो साला कोई भी कुछ भी बना देता था और बोल देता था ये अच्छा है ये अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में आने वाला है, दैट इज रियली गुड। मैं इंडिया के लिए बोलूंगा बस, हाँ मतलब सब बिहार के लिए नहीं, कुछ छोड़ो यार क्या बोले। अच्छा, नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन टू हिल्स। इस बार बजट में पहली बार नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ किया गया है, एंड शायद पहले भी किया गया होगा, बट ये वाला बहुत अच्छा एक डिसीजन है। मैं सच बात बताता हूँ, मतलब मैं पहाड़ बहुत घूमता हूँ, तो आई नो दिस कि वहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन है उसका बहुत मेल न्यूट्रिशन आता है, बिकॉज चीज़ें इंपोर्ट होता है। सबसे पहली बात, आप चिकन ले लो, मटन ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ से लोग मेडिसिन भी लेके आते हैं, राइट। बहुत कम पहाड़ है। अब आप सिक्किम को मत जोड़िए, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी सिक्किम, क्योंकि वहाँ पे ही है जो भी सब्सिडीज देते हैं, तो वहाँ पे ही मेडिकल हब्स है। बट नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेघालय हो गया, कोई भी आप गाँव की तरफ जाओगे ना, रिसेंट टूर में मैंने देखा है ये सारा चीज़ें मेल न्यूट्रिशन बहुत होता है। दे आर वेरी पावरफुल पीपल इन द सेंस ऑफ जो भी उनका इम्यूनिटी है, बट स्टिल न्यूट्रिशन एक इशू है जहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया है, और एक काइंड ऑफ अच्छा खासा बजट उस पर एलोकेशन किया है ताकि उन तक न्यूट्रिशन पहुंचे, एंड दिस इज रियली गुड। ओके ओके, नेक्स्ट की बात हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, सबकी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ओके, एआई सेंटर 500 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर खोलने में। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। जो भी डाटा, जो भी मतलब इंडिया को भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। रिसेंटली ये डीप सीक आ गया, अलीबाबा ने क्लेम किया है वो डीप सीक से भी अच्छा है, चैट जीपीटी से तो फार फार बेटर है। तो इंडिया को भी एक इंस्टीट्यूट ऐसा खोलना चाहिए जहाँ पे नया पीपल, डाटा एनालिटिक्स हो गया, एआई हो गया, इस पर फोकस करके यूथ्स को अच्छा खासा मतलब वो चीज़ आ सकता है। दैट इज गुड फॉर इंडिया। ओके, 200 सेंटर्स ऑफ मेडिकल बाय 2026, अच्छी बात है। 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेडिकल के लिए किया गया है। 1.5 लाख करोड़ तक स्टेट्स को मिलेंगे जो भी चीजें हैं विदाउट इंटरेस्ट, अगर आप ये सारा सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, 10 लाख मोर बाय 2030। ओ सॉरी, दिस इज फॉर इंफ्रा, 10 लाख मोर बाय 2030। हाँ, 1.5 लाख करोड़ स्टेट्स को इनिशियली मिल जाएंगे कि अगर आपको इंफ्रा का बजट चाहिए वगैरह चाहिए तो अच्छा प्रोजेक्ट होने पे विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट 50 साल के लिए मिलने वाला है लीज पे, और 10 लाख और भी मिल सकते हैं 2030 तक, जब और बजट हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब पावर सेक्टर पे आते हैं। ठीक है, ये बहुत मजेदार होने वाला है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इसमें ही ये पावर सेक्टर का जो स्पीच दिया है ना, ये बताता है कि हाउ इंडिया विल
ग्रो एज अ नेशन, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, मैं आपको ये चीज़ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, दादा अगर मैंने 50,000 ऑप्शन से अर्न किया है तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? एसटीसीजी कितना है? 20% है ना अभी? 20% है तो फ्लैट 20% आपका जाएगा पहले 10,000 रुपये, और कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि अगर साल साल में, और एक चीज़ है, मतलब इन द सेंस ऑफ अगर आपका पूरा टोटल अर्निंग 1.5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं है ऑप्शन से। अगर 1.5 लाख के ऊपर है तो आपको वो टैक्स रेट के ऊपर देना पड़ेगा। एसटीसीजी दे के फिर आप रिबेट ले सकते हैं, बट एसटीसीजी पे कोई रिबेट नहीं आता है, तो देना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। ओके, अच्छा, जो हम अब बात कर रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पावर सेक्टर। मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को, फॉर एनी सिविलाइजेशन एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर हमको सिविलाइजेशन में आगे जाना है तो एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा। और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया एक लाइन बताता हूँ। सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू स्टेट्स को सब्सिडीज मिलने वाला है इलेक्ट्रिसिटी में। टू बी ऑनेस्ट, दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है दैट इज़ रियली गुड। अभी भी बंगाल इतना ज़्यादा, बंगाल में नहीं बोलूँगा मैं, मतलब कुछ कुछ प्रोविंस होगा बंगाल में, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है ना वो कंबाइंड आता है 3 महीने का। अब अगर 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो ऑब्वियसली स्लैब्स बढ़ जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग देयर, बट हाँ अच्छी बात है, सब्सिडीज दिया गया है। अब स्टेट्स कितना तक सब्सिडीज लेके, क्या वो, देखिए सेंट्रल से तो ले लेंगे, क्या वो लोग तक पहुंचाएंगे कि नहीं, दैट विल बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी इंक्रीज बाई 2047, सर्टेन अमाउंट ऑफ गीगाटॉन्स वगैरह था, मैंने वो नोटिस नहीं किया। न्यूक्लियर एनर्जी इंक्रीज बाय 2047 मतलब एक वास्ट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 इंडिया इज एमिंग टू अचीव। मतलब 100 साल ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज द मैनिफेस्टो कि 100 साल ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर इंडिया इज गोइंग टू बी अनदर सुपर पावर, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग। अगर ये अचीव हो जाता है देन स्काई इज द लिमिट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू मेक सम फॉर्च्यून, कुछ पैसे एलोकेट कीजिए, रिस्की सेक्टर्स को उठाइए। ये सब एफएमसीजी, सेफ, लार्ज कैप, इससे पैसा बनेंगे नहीं। इससे क्या होगा, आपका पैसा सेफ रह सकता है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को बीट सकता है, बस ये। लेकिन अगर आपको वो चीज मुकाम पे जाना है देन यू हैव टू गैम्बल ऑन द बजट। यस, यू हैव टू गैम्बल ऑन द बजट। ये कौन सा सरकार रह सकता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, लुक आउट द प्रोबेबिलिटीज। अगर ये हो जाता है देन देयर विल बी फॉर्चून्स टू मेक। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट, लुक आउट फॉर इट, ठीक है। अमेरिका अभी ग्रीन को सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उनके पास अभी भी वो इंफ्रा नहीं है ग्रीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन फिलहाल नहीं है, 2030 तक हो जाने वाला है। तो प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ओके, नेक्स्ट आता है एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स बिल्डअप। एयरपोर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप होने वाला है, शिपिंग पोर्ट्स भी बिल्डअप होने वाला है, ठीक है। बिहार बहुत ज़्यादा फोकस है। अच्छा, टूरिज्म, गवर्नमेंट सपोर्ट कल्चरल, रिलीजियस, मेडिकल, मतलब टूरिज्म में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने वाला है, कल्चरल टूरिज्म बनने वाला है। तो मोनार्क्स हो गया, कोई भी म्यूजियम्स हो गया, कोई भी कुछ भी हो गया, तो कल्चरल में फोकस आने वाला है, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस वाला टूरिज्म भी बढ़ने वाला है, एंड मेडिकल टूरिज्म, मतलब जो हमने बताया ना 200 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आने वाले हैं, तो उनमें इतना अच्छा खासा फोकस करने वाले हैं कि मेडिकली जो ऐसा होता है ना, इंटर कॉन्टिनेंट, इंटर कंट्री मेडिकल विजिट होता है, उस तरह का चीज़ है। और एक चीज़, इससे मैं आपको एक और स्टॉक्स का सजेशन देता हूँ कि एआई ड्रिवन जब होने वाला है, तब वहाँ पे मेंशन किया था एआई विल फोकस ऑन हेल्थ केयर, इंफ्रा एंड एजुकेशन। यस, तो फाइंड आउट कौन सा कंपनी वैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है जो कि मेडिकल में काम लगता है, समझे। अब आप अगर कोई भी ऑपरेशन, अगर थोड़ा सा भी अच्छा एरिया, अच्छा जगह पे जाओगे टायर 1 पे, तो लेजर ऑपरेट होता है। पीपल, मतलब डॉक्टर्स डोंट ऑपरेट विद देयर हैंड्स एनीमोर, दे जस्ट गाइड द एआई कहाँ पे क्या करना है, देयर एक्सपर्टीज एंड द परफेक्शन ऑफ एआई। तो फाइंड आउट कंपनीज दैट विल बी वेरी क्रूशल, जो एआई सप्लाई देता है, जो एआई डिलीवर करता है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को। आई एम नॉट मतलब सजेस्टिंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक, फाइंड इट, आपका ये काम है। आप जाइए, आप ढूंढिए कौन सा कंपनी है, सिर्फ गूगल से नहीं, पूरा एकदम छान मारिए कौन सा कंपनी ला सकता है, ठीक है। मैं स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा, उस कंपनी में से लार्ज कैप होगा, उस सेक्टर में लार्ज कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, फिर वहां पे रिसर्च करके एक डिसीजन लीजिए, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट आता है कौन सा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये बहुत अच्छा बात है। कोई भी अभी ज़मीन खरीदने जाएंगे तो चक्कर काटते काटते लोगों का अगर थोड़ा सा भी कनेक्शन नहीं होगा तो आपको बीएलआरओ से कोई भी कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, और फिर इन द सेंस ऑफ आपको ब्रोकर का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर ये मॉडर्नाइजेशन हो जाता है लैंड रिकॉर्ड्स, देन बहुत अच्छी बात है। अब महुजा नंबर हो गया, खतियान नंबर हो गया, डायरेक्ट पुट करेंगे, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आता है सपोर्ट टू एमएसएमई एक्सपोर्टर्स थ्रू मॉडर्नाइजेशन। ये तो हमने पहले डिस्कस किया। इंफ्रा फॉर एयर कार्गो, एयर कार्गो में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इंपोर्ट गुड्स, फ्रेजाइल गुड्स, बहुत ज़्यादा वर्टिकल्चरल गुड्स, इनमें फोकस किया जाएगा। तो कार्गो बहुत मतलब एयरपोर्ट्स में, एयर कार्गोज में अच्छा खासा फोकस किया जाएगा। ठीक है। अब रेगुलेशंस एंड, हाँ ये चीज़ थोड़ा सा खराब है और एक चीज़ अच्छा है। एफपीआई लिमिट टू 100% फॉर कंपनीज हु इन्वेस्ट फुल्ली टू इंडिया। एफपीआई का एक कैपिंग होता है ना, जैसे सेबी ने एफपीआई का कैपिंग कितना में लगाया था, अराउंड 75% के आसपास, कि इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसको बढ़ा के फिर से 100% कर दिया है, ओनली टू दोज एफपीआई जो कि ऐसे कंपनी में लगाएंगे जो फुल्ली इंडिया को, मेड इन इंडिया पे जाता है, मतलब उससे उसके बाहर इंपोर्ट मतलब काम नहीं करता है, पूरा ऑपरेशन इंडिया में। तो उस कंपनी में अगर एफपीआई इन्वेस्ट करेंगे तो 100% कैपिंग होने वाला है। तो ढूंढिए कंपनीज, ढूंढिए जहां का पूरा ऑपरेशन इंडिया में सीमित है। अब उन पे देखिए, लेवल्स निकालिए। ठीक है, ओके। क्या है ना, थोड़ा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। ओके, अच्छा। नेक्स्ट आता है रेगुलेशंस लाइसेंसिंग टू नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स। दिस इज कंसर्निंग, वेरी मच कंसर्निंग। करप्शन बढ़ेगा इससे। फिनेंशियल सेक्टर्स में बहुत अच्छा खासा रेगुलेशंस है। अब जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया उनमें रेगुलेशंस एंड जो लाइसेंसिंग है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मतलब इन द सेंस ऑफ कंपनीज आ पाते हैं। अब क्या है ना, एंट्री बैरियर बढ़ जाएगा। तो जो लोग है ऑलरेडी उनके लिए ठीक है, बट जो स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, शायद अगर थोड़ा सा भी फंडिंग का इशू हुआ तो लाइसेंसिंग का दिक्कत आ सकता है। ओके, अच्छा। नेक्स्ट आता है सेक्टर्स पे, नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एक्सपेक्टेड जो था वो अराउंड 4.9 से 5.3 के बीच में था, ठीक ठाक। ओके, अब वो क्या हुआ है ना, वो 4.8 फॉर 2025 एंड 4.4 फॉर 2026, थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव किया है। अच्छी बात है, ऑब्वियसली 0.4% का घटना इस तरह से चलेगा तो बाई 2030 और 32 अगर ठीक ठाक सब चला, फिस्कल डेफिसिट विल बी अंडर 0%। ठीक है, अगर आधा % करके भी हर एक साल घटता है तो दैट विल बी वेरी गुड, जीरो लोन्स एंड गुड फॉर इंडिया। ठीक है, बट मार्केट ने तभी एक रिएक्शन दिया जब फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात किया ये एरिया पे। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो नंबर्स फेक, या तो नंबर्स अचीवेबल नहीं हो सकते, या फिर जो बड़े पैसे थे वो और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो टैक्स ऑन क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन। मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन वगैरह, कैंसर्स का हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन हो गया, उनमें टैक्स घटने वाला है। तो ऑब्वियसली डू लुक आउट फॉर एफएमसी फार्मा कंपनीज, थोड़ा बहुत मुनाफा उनको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्योंकि क्या है ना, टैक्स तो घटने वाला है, प्राइस कंज्यूमर्स को वही पड़ेगा। ओके, नो फ्लैट पैनल्स के 20% जीएसटी फ्रॉम 10%। फ्लैट पैनल्स, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स जो जहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं तो उन पे 10% से 20% टैक्स लगा दिया। लिथियम बैटरीज पे सपोर्ट दिया गया है। तो दिस इज ऑल द बजट। इसके बाहर आई डोंट थिंक हमें ज़रूरत है, इतना काफ़ी है। तो ये एक समरी मैंने बता दिया आप लोगों को बजट का। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड बन नहीं जाते, नहीं बनते। मैं किसी कंपनी के लिए थोड़ी ना काम कर रहा हूँ, और मुझे कहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करना है। कभी रिक्वायरमेंट होगा तो बन जाएंगे, लाइसेंस है, सारा चीज़ें है, उसमें क्या है। सिर्फ रजिस्टर करने से नहीं होता है ना, बहुत सारा रेगुलेशंस आ जाते हैं ये सब। बजट अच्छा है तो निफ्टी गिर क्यों रहा है। इन्वेस्टर्स कंपनीज के लिए अच्छा है, और कंपनीज को फर्क नहीं पड़ रहा है मार्केट नीचे आए, मार्केट शेयर घटे ना घटे। अरे कंपनी तो हम तो धंधा करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, हमको मिलेगा ही। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है, जो चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए होना चाहिए था, मैं आपको बताता हूँ। दादा एफएल इंडिया, जेंसा टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट बहुत जीरो। मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता हूँ, बट आपने अगर ढूंढा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उनमें से एक दो कंपनीज मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको बताता हूँ, एफएनओ में लॉस में है तो टर्नओवर पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, एसटीटी वगैरह छोड़ के कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सुनिए, तो मार्केट क्यों गिर रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए खास कुछ नहीं किया गया। जैसे कि एचएनआईज के लिए
कोई भी एंजल टैक्स पे रिबेट नहीं दिया गया है। अब व्हाट इज एंजल टैक्स? जो कि एंजल इन्वेस्टर्स है, इन द सेंस ऑफ जो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, जो लोग बहुत पैसा स्टार्टअप्स पे लगाते हैं। स्टार्टअप को तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगा, लेकिन गवर्नमेंट कितना देर सपोर्ट करेगा? सपोर्ट तो वो सारा सी चीजें थोड़ा बहुत लाइसेंसिंग टैक्स वगैरह में कर दिया, फंडिंग तो गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा ना। वो तो जाके बैंक पर नहीं बोल सकते सर मेरे को लोन चाहिए, नहीं तो उनको तो फंड हाउसेज हो गया, उनको तो HNIs के पास ही जाना पड़ेगा अपना इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए। तो जो था वही है। तो अगर जो था वही है, मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन पे, और क्या ही देखेंगे। हाँ, अब अगर मार्केट पे यहाँ पे होता कि रिबेट दिया गया है एंजल टैक्स पे, तो लोग चलो उठाएंगे। अच्छा, दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स पे कोई भी ट्विक्स नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स पे थोड़ा ट्विक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द सेंस ऑफ अगर जो भी कंपनीज के लिए होता है, तो वहां पे कोई ट्विक नहीं दिया गया है। थर्ड हो गया, ये दो हो गया। थर्ड हो गया लिक्विडिटी, यहाँ पे रिटेल मतलब इन द सेंस ऑफ HNIs को भी तो अपना टैक्स वगैरह भरना पड़ता है ना। LTCG में कोई भी बदलाव नहीं किया है, थोड़ा बदलाव एक्सपेक्टेड था, थोड़ा इतू से ही मार्केट पे जान आ जाता। स्विंग वालों को कितना देना पड़ेगा LTCG? स्विंग वालों को LTCG नहीं देना पड़ेगा। LTCG इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1 साल के ऊपर LTCG है, 1 साल के नीचे STCG है। क्या आप STCG भी दोगे, LTCG भी दोगे? अरे ऐसा, बाप रे बाप, ये ख्याल भी भयंकर है। टैक्स का फिर से बताओ एक बार, न्यू रेजिम। देखो वो स्लैब्स तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं आपको इतना बोल पाऊंगा, विदाउट कैपिटल गेन अगर कोई 12 लाख तक कमाता है तो आफ्टर डिडक्शन वगैरह एवरीथिंग, ओल्ड टैक्स रेजिम पे आपको डिडक्शन वगैरह मिला के 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, जो रेल की बात हमने किया था कि जो रेल का है, डिफेंस में तो उतना कुछ नहीं बोला है, बिकॉज 2024 का इंटरिम बजट में ही डिफेंस सेक्टर पे काम बात कर दिया था। बट हाँ, एक और चीज, प्राइवेटाइजेशन को ना स्लो डाउन नहीं किया गया है। तो PSU सेक्टर्स वगैरह पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, उस पे बात नहीं किया गया है। तो दिस इज गुड फॉर मार्केट आई थिंक, क्योंकि इनोवेशन अभी भी बचा हुआ है। तो प्राइवेटाइजेशन अगर स्लो डाउन किया जाता, शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाता, बट वही लॉन्ग टर्म में दिक्कत होता। ओके, 1245 का स्ट्रैटेजी, 1215 का स्ट्रैटेजी। अच्छा देखो, अगर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उतना ज़्यादा मतलब नहीं करूँगा इन द सेंस ऑफ, इसीलिए क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर मान के चलते रेंज ही नहीं बना पाया, सपोज ये कैंडल अगर नहीं आता और यही कैंडल अगर 12:15 के बाद आता तो मैं शॉर्ट कर देता, एक बार मैं चांस लेता। बट ये कैंडल में किया है, अब नया लोज ऑलरेडी बना दिया है और यहाँ पे नया हाइज भी बन चुका है, तो रेंज ही नहीं है, सिर्फ 2 कैंडल बाद तोड़ा है। तो काइंड ऑफ अगर तोड़ेगा भी तो शायद वो धीरे धीरे आ सकता है, तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। और बजट ठीक ठाक ही है, उतना ख़राब नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं है, बट इंडिया के लिए अच्छा है। इंडिया के लिए ख़राब नहीं है, इंडिया के लिए अच्छा है। मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा। मार्केट हो सकता है आपको इम्बैलेंस भी लेने को आने को देखने को मिले, बट मेरा मोटो वो नहीं था। मैं नहीं बोल रहा हूँ आज का आज ही इन्वेस्ट करना है, आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो स्टॉक हाथ से निकल जाएगा, मैंने कभी बोला है क्या? मैं बोल रहा हूँ जो बजट है दैट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर वैल्यूएशन में मिलता है स्टॉक्स, उस सेक्टर्स को स्पेशली देख के जाना चाहिए। कैपिटल गेन का क्या है? विथ कैपिटल गेन अगर आप करेंगे, सपोज कोई कैपिटल गेन को मिला के 12 लाख रुपए तक इनकम कर रहा है, तो कैपिटल गेन कितना, उसमें से अगर 6 लाख होगा तो 6 लाख पे आपको वही टैक्स देना पड़ेगा, कोई रिबेट वगैरह नहीं है। 6 लाख पे आपका फ्लैट LTCG या STCG। तो हमको नॉर्मल इनकम टैक्स देना पड़ेगा या टर्नओवर पर देना पड़ेगा? टर्नओवर पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले आपका तो STCG LTCG जो भी आपका आता है कटेगा। उसके ओए आप टैक्स जाइए तो एक बार CA के साथ बात कीजिए यार, मेरे को ही आप बना दोगे, इस सब के लिए पैसा लगता है। CA के पास जाइए, वो आपको पूरा टैक्स समझाएंगे। बट हाँ, आपको LTCG या STCG दे के जो भी बचता है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको इनकम टैक्स पे देना पड़ेगा। STCG 20% है। रेल के लिए, हाँ रेल के लिए प्राइवेटाइजेशन जब नहीं हुआ है, ठीक ठाक है, और उतना कुछ खास दिया गया नहीं है। कार्गो में थोड़ा बहुत आ सकता है।
I'm so sorry, रेल में भी कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़ सकता है। भारत जोड़ो योजना, जोड़ो बोल रहा हूँ मतलब इन सॉरी, जो एक योजना है तो उसमें रेल का कनेक्टिविटी बढ़ सकता है, जो कि पहले से ही तय था। हाँ, उड़ान, भारत उड़ान यात्रा, इसमें बहुत सारे नया एयरपोर्ट्स वगैरह बनेंगे। उसमें से ग्रीन एयरपोर्ट बिहार में बनेगा, तो बिहार तो फुल फोकस पे भी धंधा करेंगे बिहारी भाई बंधु हमारे। मतलब हमको भाई भी नेशनल स्टेटस से नेशनल कच बन जाऊंगा। हाँ हाँ, आज देखोगे जो लोग कॉमर्स पे है भी नहीं वो लोग बजट को लेके क्या बजट है, पूरा चाय के टपरी पे आज देखोगे क्या बातें होने वाला है। क्रिप्टो इनकम का टैक्स बता दीजिए, टीडीएस घटने वाला है बट एसटीसीजी तो लगेगा ही लगेगा, और वो चीज़ पूरा पूरी अगर क्रिप्टो इनकम आता है तो आउटसाइड सोर्स 30% आ जाता है। देख लेना, एक बार बात करो अपने सीए वगैरह से। डिफेंस सेक्टर में उतना बात नहीं किया गया है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत शिप्स का पोर्ट अगर बनता है तो डिफेंस पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा हेल्प हो सकता है। दादा आज वो वाला सीन हो गया है, वाह वाह बिल्कुल, वाह वाह छी छी, एग्जैक्टली, पहले वाह वाह करके लास्ट में छी छी कर गया है। हम 3 या 4 फरवरी से लाइव आने वाले। कल और परसों सरस्वती पूजा है, वसंत पंचमी है, तो वहाँ पे हम थोड़ा बिजी रहेंगे। और फिर ट्यूसडे को थोड़ा सा पर्सनल काम है, वेडनेसडे या थर्सडे से आएंगे। तो आपके कहने का मतलब है स्विंग पर जाना पड़ेगा टोटली। कुछ भी करो पैसा कमाओ, स्विंग करो, ऑप्शन करो, लॉन्ग करो, पैसा कमाओ। रियल एस्टेट पे देखो, बिहार में सुल्तानगंज में बनेगा 2 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, ब्यूटीफुल। पता आपका कोर्स लीक हुआ है क्या? ऐसा नहीं है, एक दो शायद। देखो लीक तो सिनेमा से भी होता है, मतलब मूवी आया कि नहीं आया वो डायरेक्ट तमिल रॉकर्स पे चला जाएगा, हम भी देखते हैं वहाँ से। लेकिन तमिल रॉकर से देखने के बाद भी एक्चुअल मूवी को हम देख रहे हैं, अगर अच्छा है तो हॉल पे जाते, नहीं तो एक्चुअल अगर नेटफ्लिक्स पे होना हो तो सब्सक्रिप्शन देके देखते हैं, क्योंकि क्वालिटी का इफेक्ट है। तो आपको वही चीज़ देखना पड़ेगा। छोटा मोटा इधर उधर हो सकता है बट कम्युनिटी में कैसे आओगे? पावर सेक्टर विल बी गेट बेनिफिटेड ऑब्वियसली। पावर सेक्टर में थोड़ा बहुत मिलने वाला है फोकस। ग्रीन हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जीज का हो गया, डिफेंस में भी इंडिया इज लुकिंग गुड। आई थिंक आई एम बुलिश ऑन इंडिया। देखो आज बजट आया है, डू नॉट एक्सपेक्ट कि आज का आज बूस्ट हो जाएगा, आज ही 10% मार्केट भाग जाएगा। सपोज निफ्टी को भागना है 20%, आज भाग गया सारा, बाकी 2 साल मार्केट बंद, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो दिस इज अ गेम ऑफ विनिंग एंड लूजिंग। सबको दिख रहा है बजट अच्छा आया है, अब तो सब बाई करने वाले, तो लूज कौन करेगा, तो सेल कौन करेगा? सबको दिख रहा है, ओ वाह इतना अच्छा टैक्स, तो अब एफएमसीजी बाई करेंगे, हम कर रहे हैं ना बाई, तो पहले लिक्विडिटी लिया जाएगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, चलो रिसर्च करो भाई, हम भी चलते। शी, रेलवे स्टॉक्स का क्या करना, रेलवे स्टॉक्स का क्या करना है? आप क्या करेंगे? अब जो करेगा वो तो रेलवे का स्टॉक्स करेगा। विक्स इन डाउन to 10% टुडे, नो पॉइंट इन बाइंग ऑप्शंस। नहीं मिलेगा, वो तो ऑलरेडी इंक्रीज्ड है ना। अगर मेरे पापा बैंक एफडी इंटरेस्ट प्रॉफिट से 10 लाख कमाता है पर यार, देन कोई टैक्स नहीं देना होगा, नॉट इवन टीडीएस, ही सीनियर सिटीजन। नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा। टीडीएस का भी 50,000 से 1 लाख तक एग्जाम कर दिया है, और सीनियर सिटीजन के लिए और अच्छी बात है। व्यू ऑन गोल्ड 2.2 दे रहे हैं। अच्छा गोल्ड, यार क्या ही बोले, गोल्ड को देख के ना खराब ही लगता है कभी कभी। गोल्ड का व्यू क्या दे, अब पुराना जैसा बात नहीं रहा, तो वो चीज़ कभी मत कीजिएगा कि गोल्ड भाग रहा है मतलब मार्केट गिरेगा। डजेंट मैटर, गोल्ड भागे ना भागे, ठीक है। अब जो है ना, अब मार्केट अलग ही है। अब गोल्ड भी भागेगा, मार्केट भी भागेगा, गोल्ड भी गिरेगा, मार्केट भी गिरेगा, एफएमसीजी भी गिरेगा, फार्मा भी गिरेगा, तीनों एक साथ भागेगा। कोई लिंक नहीं है वहाँ पे, लिक्विडिटी का खेल बढ़ चुका है अब। तो गोल्ड का अगर जो है, हाँ गोल्ड बहुत ऊपर है, यू नो। फिजिकल एसेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एलोकेशन कुछ कुछ हुआ था, बट दिस वाज द एरिया जहाँ पे मैं देखने वाला था अगेन 72,000 के आसपास एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट, बट ये एरिया तक प्रोसीड नहीं कर पाया। एनीवे आगे देखते हैं।
मैं स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू न्यू रेगुलेशंस ऑफ सेबी फॉर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स या फिर एडुकेशन. आई कैन नॉट डू दैट. वाई आई कैन नॉट डू दैट? क्योंकि जस्ट अ मोमेंट, हमें मतलब मैं करंट प्राइस में आपको बोल नहीं सकता हूँ, 3 महीने का पहले का डाटा दिखाना पड़ेगा. दैट इज एब्सर्ड. इससे अच्छा है मैं स्टॉक्स का नाम ही नहीं बताऊंगा, सेक्टर बता दूंगा. इधर गया. टू टी मोटर्स. यार पुनीत, अगर कॉमन सेंस बाजार में खरीदने को मिलता तो मैं खरीद को तुमको गिफ्ट करता. गजब आदमी हो यार. ऑयल सेक्टर, वेल ऑयल सेक्टर ठीक, कोल सेक्टर पे उतना ज्यादा फोकस मत कीजिएगा आने वाले टाइम पे. ओके एवरीबॉडी, आई होप प्रंजल जी ये चीज एक बार एनेक्स्चर आ जाए मेरे पास, एक बार वो नोट आ जाए. मैं बजट का आफ्टर मैथ बताता हूँ, पूरा आफ्टर मैथ बताता हूँ यूट्यूब का वीडियो में, ठीक है, फुल डिटेल्ड में. ओके, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड यस्टरडे. हम कल या परसों तक वो बना देंगे. ओके चलो चलो एवरीबॉडी, चलो एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर. आई एम नॉट ट्रेडिंग टुडे, ठीक है, आई हैव नो इंटरेस्ट टू ट्रेड टुडे. आराम से स्टॉक्स ढूंढिए, जो जो चीज़ मैंने बताया उनमें फोकस कीजिए, लिस्ट बनाइए, एनालिसिस कीजिए. रिसर्च कैसे करना है वो भी बता दिया है मैंने, रिसर्च एनालिसिस सीरीज डाल के. लोगों को तो देखना नहीं है, लोगों को पसंद है कौन सा कलर के चड्डी पहने हो. राइट. कौन करेगा रिसर्च, फ्री में मिल जाता है रिसर्च रिपोर्ट. राइट. हम 200 रुपये सब्सक्रिप्शन देख के वो ऐप से देख लेंगे क्या बोल रहा है, बाई सेल होल्ड. राइट. तो ओके, दैट्स ऑल राइट. हर कोई कमाने लगेगा तो फिर गवाएगा कौन. एनीवे, रिसर्च कीजिए पूरा चीज़ें, एवरी एनालिसिस, उसके बाद उस सेक्टर पे देखिए. एंड इफ़ यू हैव फंड्स, गो टू देम. अच्छा, अगर फंड्स का इशू है तो मार्केट पे तो ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड करके ही फंड्स आएंगे. अब ट्रेड के लिए क्या करेंगे, आज का अवॉइड कीजिए. आज वैसे भी शनिवार है. डू नॉट एक्सपेक्ट एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, ठीक है. ये टाइम तक लिक्विडिटी था, ओके. अगर 12:30 12:15 के बाद वो चीज़, ये कैंडल 12:15 के बाद बनता, एक और झटका मिलता. बट नाउ डू नॉट एक्सपेक्ट, इट इज़ सैटरडे. 50% पीपल आर गॉन इन द सेंस ऑफ हो चुका है उनका. अब वो आउट है मार्केट से इन द सेंस ऑफ आज ऑन नहीं करेंगे. और जो भी फंड हाउसेस वगैरह है वो भी अब थोड़ा सा जाएंगे, मतलब हो गया. तो प्लीज़ डू नॉट ट्रेड टुडे. मंडे ट्यूसडे से चालू कीजिए, इंडेक्स पे देखिए. और बजट हो चुका है, अब बजट का व्यू लेके इंडेक्स पे ट्रेड मत कीजिए, वो जब करेगा करेगा. अब इंडेक्स को प्योर टेक्निकल लेवल्स पे हमें देखना है. दिस वाज द वॉच जोन, एग्जैक्टली मार्केट रिएक्टेड फ्रॉम हेयर. ये वॉच जोन तक जाना चाहिए था. उससे पहले मार्केट ने लिक्विडिटी लेके 50,000 का जो ये अपना राउंड नंबर है, पीएसवाई नंबर को भी रेस्पेक्ट किया. अच्छा नंबर था, लिक्विडिटी भी लिया गया, नीचे आया, फिर से वो जाएगा. यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंज हुआ है तो काइंड ऑफ कुछ दिन यहाँ पे प्रेशर नीचे की तरफ बना रहेगा. अनलेस कैरेक्टर नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ चेंज हो, तो ऊपर से शॉर्ट करना इज बेनिफिशियल. ओके चलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच. बंद मत करना. श्योर, आई कैन नॉट से स्टॉक्स, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, डालेंगे. चलो एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून. वेडनेसडे या थर्सडे को मुलाकात होगा, तब से हम लाइव करेंगे, हफ्ते में 2-3 दिन करेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय.